हे हाय। सो अपन लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड कि बॉस मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा दैट विल बी नेगेटिव 180 degrees with respect to x axis, and so this is my resultant force which is making 100 and negative 80.4 degrees with respect to x axis, and this resultant force R is equal to 133.4 किलोन्यूटन्स जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। बट सवाल ये उठता है कि बॉस अगर मेरा थीटा नेगेटिव 80.4 डिग्री है देन even this is negative 80.4 degrees, even this is negative 80.4 degrees, even this is negative 80.4 degrees, even this is negative 80.4 degrees. So now I'm interested to know ki what is my position? What is my position of my resultant in this system? For that, we have to use this equation, which says ki summation of, it's, if I take some point, let's say my point is A. So about this point A, अगर मैं summation करता हूँ of the moment of all the forces in the system, यानी ये 50 ये 120 ये 30, मैं अगर सबका summation करता हूँ moment का about this point A, then that should be equal to the moment of my resultant about the same point A, which makes sense because resultant का मतलब ही है that it's the result of all these forces. Okay, so now let's prove that. And what we are interested to find the position. Position of my resultant. So it could be anywhere in this system making negative 80.4 degrees, but now we are interested वो कहाँ पे है. Okay, so now let's start. Now before starting this, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि अगर मेरा फोर्स में लगा रहा हूँ, लेट्स से 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, और बिकॉज ऑफ दिस फोर्स अगर मेरा सिस्टम अबाउट दिस पॉइंट ए क्लॉकवाइज घूम रहा है, देन इट्स नेगेटिव. You can take anything, you can take this as positive, you can take this as negative, but let's say in this case, in this problem हम लोग नेगेटिव एज्यूम कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव लो पॉजिटिव लो. ऑलराइट, एंड वी से कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ और उसके कारण मेरा सिस्टम अबाउट सम पॉइंट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, then it's positive. This is the assumption, that's the assumption that we are making. All right, now on this assumption let's start solving this problem. Okay, तो हम बोल रहे कि यार मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ विच इज ए, ये वाला पॉइंट अपना, और मैं चाहता हूँ कि मैं सब फोर्सेस को ऐड करूँ, सब फोर्सेस के मोमेंट्स, आई मीन मोमेंट्स को ऐड करूँ अबाउट दिस पॉइंट ए, एंड which is also equal to the moment of my resultant about this same point. And then we know कि boss मेरा जो moment होता है that is nothing but मेरा force multiplied by the perpendicular distance between the force and the point which is into picture. In this case we are assuming, I mean we are considering A. Alright, now let's start. अपना point है A. Now let's start with the first force which is 50 kilonewtons. मैं चाहता हूँ कि, so we'll write the equation कि मेरा summation of the moments about the point A of all the forces is equal to, शुरुआत करते हैं पहले फोर्स से 50 kilonewtons. So just assume कि अगर मैं 50 kilonewton फोर्स लगा रहा हूँ और जस्ट एज्यूम कि ये पॉइंट ए पे मैंने एक पिन लगाई है, तो दिस सिस्टम बिकॉज ऑफ दिस फोर्स विल रोटेट क्लॉकवाइज, एंड आई से कि यार अगर क्लॉकवाइज है तो मेरी जो साइन है दैट इज
negative. So this will become negative 50 into, so this is force, 50 is the force, into the perpendicular distance. So this is my force and the perpendicular distance is this distance, which is 2. So this 50 into 2. अब मेरा दूसरा फोर्स कौन सा है? This is my second force which is 120 kilonewtons. अगर मैं ये फोर्स लगाता हूँ और अगर ये पॉइंट ए पे मैंने एक पिन लगाई है, सेफ्टी पिन, तो मेरी सिस्टम क्लॉकवाइज घूमेगी. एंड मैं बोलता हूँ कि अगर क्लॉकवाइज घूमती है देन इट इज अगेन नेगेटिव. सो अगेन नेगेटिव 120 which is force into perpendicular distance which is this distance between this A and this force 120 which is equal to 2. Alright, so 120 into 2. अब अपना तीसरा फोर्स कौन सा है? Now this is my third force which is 30 kilonewton. But सीन ये है कि ये जो 30 kilonewton है it is along x and along y direction. So अपन ने उसका composition अपन ने उसको resolve किया है along x and y direction. So let's zoom it and observe. Alright. So ये जो मेरा force है 30 cos 22 उसका direction ये है. So this force into this perpendicular distance. Alright. And when I consider this force, then this force into this perpendicular distance. So perpendicular distance का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो force है वहां से लेकर के जो point तुम consider कर रहे हो वहां तक का perpendicular distance. Okay, so let's solve it. Okay, so now I want to know, let's start from this force. This is 30 sine 22.6 multiplied by, so it's it's this force about in y direction. So this is my force which is 30 into sine of 22.6 multiplied by the distance, perpendicular distance from from let me change the color, from this force up till this point A. अब ये distance कितना होगा? So let's calculate it. अब मैं बोलता हूँ, now इधर दिया हुआ है that this is 1.5. तो अगर ये 1.5 है तो ये जो distance है that will be 1.5 cos of 67.4. एंड ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक that will be equal to 1.5 sine 67.4. Okay, so that is equal to